Today we are starting exercise 8.3 with question number 7. So question number 7 is Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. मारिया ने इन्वेस्ट किए 8,000 रुपीज़ एक बिजनेस में. शी वुड बी पेड इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. उसे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडेड है एनुअली. फाइंड फर्स्ट इज द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के बाद उसके पास कितना अमाउंट आएगा फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली payment principal is rupees 8,000. Rate of interest 5% and time is equals to second year means 2 years. So amount is equals to principal into 1 plus rate of interest upon 100 all power time. Okay, now is equals to principal is 8,000 into 1 plus rate of interest is 5% upon 100 and time is 2 years is equals to 8,000. LCM is 100. So 100 plus 5 whole square is equals to 8,000 into 105 upon 100 whole square. In next step 8,000 into 105 upon 100 2 times 105 upon 100. 2 zeros cancel out, 1 zero cancel out. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 4s are 8. तो आप 4 into 21 into 105 करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे रुपीज़ 8,820 रुपीज़. 8,820 रुपीज़ एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तब इस केस में. नाउ इन सेकेंड केस द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. 3 years में आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट. तो पहले हम 3 years के लिए अमाउंट फाइंड करेंगे, उसमें से 2 years का अमाउंट माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, अपन फाइंड आउट कर लेंगे the interest for the third year. So principal same rupees 8,000, rate of interest 5%, time 3 years. Firstly we have find out for 3 years with compound total amount. Okay, then subtract 2 years amount from 3 years amount, then we have get third year interest. Okay, so amount is equals to principal into 1 plus rate of interest upon 100 all power t time is equals to principal is 8,000, 1 plus rate of interest 5% upon 100 all power 3 is equals to 8,000. LCM is 100, so in numerator 100 plus 5 whole cube is equals to 8,000 100 and 105 whole cube is equals to 8,000 into 105 upon 100 3 times 105 upon 100.
2 zeros cancel out, 1 zero cancel out, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. When we have multiplied 21 into 21 into 21, then we have get 9,261 rupees. 9,261 rupees. Now interest for the third year. Interest for the third year. So interest for third year is equals to amount in third year minus amount in second year. Second year is equals to amount in third year is 9,261 minus amount in 2 years 8,820 is equals to 441 rupees interest in third year. Okay. Question number 8 is find the amount and compound interest of rupees 10,000 for 1.5 year at 10% per annum. Find out करना है amount on and compound interest. Both find out करना है 10,000 rupees for 1.5 year and the rate of interest is 10%. Compounded half yearly compound हो रहा है. Would this interest be more than the interest? अब इससे जो इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा वो ज़्यादा होगा क्या किससे? द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. अगर यही अमाउंट एनुअली कंपाउंडेड हो तो क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा पहले वाले इंटरेस्ट से या पहले वाला ज़्यादा होगा? ये फाइंड आउट करना है. वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर? तो ये जो हाफ ईयरली है इंटरेस्ट वो मोर है एनुअली कंपाउंडेड से या नहीं, ये फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली फॉर हाफ ईयरली फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फर्स्टली ये लेते हैं अपन. फॉर दिस principal is 10,000 rupees, rate of interest is 10% and time equals to 1.5 year. Okay, so amount is equals to principal into 1 plus rate of interest upon 100 all power time is equals to principal is 10,000 1 plus rate of interest 10 upon 100 all power time. Time is 1.5 year. अब इसमें आपको लर्न रखना है ये हाफ ईयरली है. तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट जो होती है हाफ हो जाती है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5% होगी. ठीक है, आपको यूज़ करनी है 5%. और टाइम जो है तो हाफ ईयरली तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर हो गए, 6 मंथ्स कितने टाइम हो गए, 3 टाइम इक्वल्स टू 3 हाफ ईयर.
3 हाफ ईयर, तो पावर आ जाएगी 3, और ये जो परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो परसेंट हो जाएगी 5, हाफ हो जाएगी क्योंकि हाफ ईयरली है। इज इक्वल्स टू 10,000, LCM is 100, so 100 plus 5 whole cube is equals to 10,000 into 105 upon 100 whole cube is equals to 10,000 into 105 upon 100 3 times, two zeros cancel out, two zeros cancel out. So now 5 2s are 10 20 times, and 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 4s are 20, and 5 2s are 10, 5 1s are 5 is equals to 21 into 21 into 105 upon 4। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ₹11,576 एंड 25 पैसे। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो टोटल अमाउंट ये आ गया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस P प्रिंसिपल is equals to amount is 11,576.25 minus 10,000 is equals to 1,576.25 रुपीज़। तो ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडेड। नाउ फॉर ईयरली कंपाउंडेड एनुअली, सेकेंड थिंग फॉर compounded annually, principal same 10,000, rate of interest 10%, annually है तो ये हाफ नहीं होगी, 10% ही रहेगी, and time equals to 1.5 year। now amount equals to principal into 1 plus rate of interest upon 100 all power time is equals to 10,000, 1 plus rate of interest is 10 upon 100. In this time annually, 1 year is 1 time, so we have put 1 power or not, it's necessary 1 time. Now for half, अब ये half year आ गया मिडिल में। For this we have used 1 plus, in half year rate is 5%, rate of interest half upon 100, and half yearly 1 time ही है, so power is 1। okay, now 10,000 into LCM is 100, 100 plus 10, and LCM is 100 and 100 plus 5 is equals to 10,000 into 110 upon 100 into 105 upon 100. 2 zeros cancel out, 2 zeros cancel out. When we multiply 110 and 105, we have get 11,550 rupees. Okay, now we find out compound interest. CI compound interest is equals to amount minus principal is equals to 11,550 is amount, subtracted 10,000 is equals to 1,550 rupees. So
In half yearly, compound interest is 1576 rupees and 25 paise, and for annually 1550 rupees. So half yearly interest is more than annually interest. Okay, so in last, yes, interest 1576.25 rupees is more than 1550 rupees. Okay.